Hello students, welcome to Aspire Academy. Today we are going to deal the chapter, one of the important chapter, that is biological classification, and the subtopic that we are going to cover is Kingdom Monera. Okay, so this is the second lecture on this biological classification topic. Okay, so we'll see what is Kingdom Monera, what are the organisms which belongs to this Kingdom Monera, and what is the characteristic feature, what is the importance of Monera. So everything we'll deal today in this lecture. So let's start. Okay, so finally, what is Monera? Kingdom Monera, it includes wide variety of prokaryotic organism. ठीक है, तो Kingdom Monera में जितने भी organisms होते हैं, they are the most primitive and they are unicellular prokaryotes. As you know, last class we have studied about the classification system. ठीक है, classification system में हमने पढ़ा 2 kingdom classification, 3 kingdom, 4 kingdom, finally 5 kingdom and 6 kingdom classification also. So at last 5 kingdom classification में आपने देखा था, the classification was done. First of the kingdom is Kingdom Monera, Protista, Fungi, Animalia, Plantia. Okay, so the first one is Kingdom Monera. So that all will study. Kingdom Monera, it include most ancient, the most primitive organism. Okay, so most ancient, smallest, and the simplest, and the most plentiful. हाँ, simplest है, smallest and plentiful also. Large numbers में पाए जाते हैं. They are prokaryotes. Okay, so therefore the Kingdom Monera, since large plentiful prokaryotes are there, so इसको आप Monera को in a simple term you can just say it is prokaryota. Okay, so what does the word pro means? Pro means before, and karyot, karyota word का मतलब क्या होता है? Karyon, that is nucleus. तो primitive type of nucleus किसके पास होते हैं? Moneras के पास. Okay, so the Kingdom Monera, it include wide varieties of the organism. Firstly, it include bacteria, Cyanobacteria, which is a blue-green algae. ठीक है, then Archaebacteria and some other small groups like mycoplasma. ठीक है, mycoplasma, rickettsia, actinomycetes, ये सब भी इसी मोनेरा से बिलोंग करते हैं. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ये सारे. ठीक है, क्योंकि अगर मोनेरा का बात आता है तो सबसे पहले इट कम्स इन आवर माइंड बैक्टीरियाज. Okay, so bacterias are the most important organism belonging to this Monera. So what is the characteristic feature of Monera? Okay, first thing we have just seen, it is the most simplest and the most primitive type of organism. Okay, it is simplest, primitive, unicellular prokaryotes. Okay, so the cell wall, अब इस प्रोकैरियोट्स के सेल वॉल और प्लांट के सेल वॉल में कुछ डिफरेंसेस होते हैं. प्लांट सेल वॉल वी नो इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, बट द प्रोकैरियोट्स, दैट इज अ बैक्टीरियल, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल यही लेते हैं इसमें. सो बैक्टीरिया का भी जो सेल वॉल होता है, दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन, नॉट सेल्यूलोज. ओके, सो द सेल वॉल कंटेन पेप्टिडोग्लाइकैन और म्यूरेन एंड द मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट. ठीक है, लाइक वी नो गोल्जी एपरेटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सारे चीज नहीं प्रेजेंट होते हैं किंगडम मोनेरा में. सो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट and the cell wall is made up of peptidoglycan or murine, and they are varied in the nutrition. Yes, nutrition Monera का बहुत तरीके का हो सकता है. either they can be saprophyte, saprophytic nutrition भी हो सकती है, parasitic also they can be, then chemoautotropic भी हो सकता है. ठीक है, then photoautotropic also and symbiotic also. So varied, you can say varied range of nutrition can be found in the Kingdom Monera. Okay, so DNA is naked. Yes, जो मोनेरा किंगडम में आप पढ़ते हो बैक्टीरियाज के बारे में, तो उनका डीएनए नेकेड होता है. दैट मीन्स इट इज नॉट बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड डीएनए इज नेकेड एंड इट इज नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन. तो जो मोनेरास के डीएनए होते हैं, इट इज नॉट मेड अप ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन. ओके, नाउ नेक्स्ट कम फ्लैजेला. ठीक है, फ्लैजेला इज प्रेजेंट इन दिस मोनेरा and they are single stranded. तो flagella जो होते हैं single strand के होते हैं, and they contain a protein that is known as flagellin. Okay, reproduction जो बैक्टीरियाज में होते हैं या मोनेराज में होते हैं, asexual मेथड के थ्रू होते हैं.
Okay, gametes are not present, that is why asexual reproduction take place. कोई gamete formation नहीं होता है, so asexual reproduction के through ही moneras they reproduces. Mitotic spindles are absent. ठीक है, mitotic spindles भी absent होते हैं. Okay, so these are the most important features of Kingdom Monera. Now, Kingdom Monera can be divided into two broad categories, that is Archaebacteria एंड द अनदर इज यूबैक्टीरिया में आप डिवाइड कर सकते हो. आर्कीबैक्टीरिया में क्या है, दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया. ये भी बैक्टीरिया है, ये भी बैक्टीरिया है. Archaebacteria, Eubacteria, both are bacteria, but the difference is Archaebacteria, they are the primitive bacteria, and Eubacteria, that is the true bacteria. Okay, now this Archaebacteria also can be categorized as methanogens, ठीक है, halophiles, then thermoacidophiles. Halophiles, thermoacidophiles. So what are these? So the bacteria, methane producing bacteria, they are known as methanogens. ठीक है, ऐसे bacteria जो methane produce कर सकते, they are methanogens. And salt loving bacteria which are present in the salt, so that are known as halophiles. Now, inhabitant of extreme acidity and extreme temperature, extreme high temperature, acid condition में भी अगर acid medium में भी अगर bacteria present है and they are not been destroyed by the acidic and the temperature, high temperature also, so that type of bacteria they are known as thermoacidophiles. नेक्स्ट कम यूबैक्टीरिया. यूबैक्टीरिया को आप कितने और भी सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, दैट इज बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया. द साइनोबैक्टीरिया दैट इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी. ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी को ही साइनोबैक्टीरियाज बोलते हैं. सो दिस इज अ ब्रॉड कैटेगरीज इन विच किंगडम मोनेरा हैज बीन कैटेगराइज्ड. Now we will see in detail about this. So what is bacteria? Firstly, what is bacteria? They are the most simplest. क्योंकि ये मोनेरा है, तो they will be the most simplest and most abundant prokaryotic organism on this earth. So firstly, किसने discover किया इस मोनेरा के बारे में? That is Anton van Leeuwenhoek. In year 1676, Anton van ने bacteria को discover किया. Okay, so bacteria are immense. They are at most important or immense importance भी बोल सकते because of their extreme flexibility and capability for rapid growth and development. Yes, bacteria grows very rapidly. Okay, and they have extreme flexibility also. Now the characteristic feature, अभी हमने just Monera के characteristics देखे, but now Monera में भी first the most important organism इसमें आते हैं bacteria. So we'll see what are the important characters of bacteria also. So they are unicellular living organism. Yes, bacteria unicellular होते हैं. The cell wall of bacterium, जैसे हमने पढ़ा मोनेरा के जो सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है. So the cell wall of bacteria, अगर आप बहुत स्पेसिफिक वे में जाओगे बैक्टीरिया का सेल वॉल देखोगे, so the cell body is composed of mucopeptide. ठीक है, that is peptidoglycan cell wall, and N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acids are present as a sugar derivative. ठीक है, जैसे हमने जस्ट पढ़ा इसके पहले वाले स्लाइड में पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरेन, इससे बना होता है बैक्टीरिया का सेल वॉल. सो बैक्टीरिया सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन का है, एंड N-acetyl glucosamine, N-acetyl muramic acids are also present as a sugar derivatives along with the A-alanine glutamic acid, then diamino, ठीक है, diamino pymalic acid. So these are present in the cell wall of the bacteria. Now, some circular structure like the mesosomes are also present on the plasma membranes of the bacteria. Plasma membranes, bacteria के जो plasma membrane है, as you can see the firstly, let's discuss about the structure of the bacteria. ठीक है, एक bacterial cell अगर आप लेते हो, ठीक है, तो जो सबसे ऊपर outermost capsule है, ठीक है, so that outermost capsule is present. Okay, so सबसे आखिरी, सबसे ओवरलैपिंग जो कवर अप करके रख रहा है दैट इज कैप्सूल, उसके जस्ट अंदर इनर साइड में होता है सेल वॉल, देन द सेल मेम्ब्रेन. ओके, एंड यू कैन सी पाइलस. ओके, इट इज हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको. साइटोप्लाज्म इज देयर, राइबोसोम्स होता है, न्यूक्लियोइड, ठीक है, न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट व्हिच इज नेकेड डीएनए. नाउ naked DNA which is not surrounded by the nuclear membrane, so that is known as nucleoid. Flagellum है, single stranded flagella भी होता है, ठीक है,
and plasma membrane is also present. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आप इनर साइड में देखोगे कुछ फोल्डिंग्स लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट आर नोन एज मेसोसोम्स, और यू कैन से सर्कुलर बॉडीज व्हिच आर नोन एज मेसोसोम्स. Membrane bounded organelles that is definitely absent in this bacteria. And both type of nucleic acid occur in the bacteria. DNA भी होता है, RNA भी होता है. ठीक है. So DNA and RNA well defined membrane bounded nucleus is absent. Membrane bounded nucleus नहीं मिलेगा, बल्कि आपको naked DNA मिलेगा, genetic material present होगा, but there will be no proper nuclear membrane. So we can simply say the well-defined membrane-bounded nucleus is absent in the bacterium, and absent है nuclear membrane. That is why it is known as, इस तरह के nucleus को बोलते हैं nucleoid, और incipient nucleus भी बोलते हैं. Now cell division, since हमने पढ़ा कि जितने मोनेराज है उनमें स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता है, so cell division like mitosis होता है, except in Bacillus megaterium, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो वहां पे माइटोसिस नहीं होता है, एंड द मियोसिस इज एब्सेंट इन द बैक्टीरिया. कोई मियोसिस नहीं होता एक्सेप्ट वन ऑफ द बैक्टीरिया दैट इज बैसिलस मेगाट्रियम. ओके, नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट. यस, क्लोरोप्लास्ट भी एब्सेंट होता है इन द बैक्टीरियाज. हाउएवर इन द फ्यू बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया आप देखो वहां पे तो होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी है. ओके, सो इन फ्यू बैक्टीरियाज बैक्टीरियोक्लोरोफिल, ठीक है, बैक्टीरियोक्लोरोफिल एंड क्लोरोबियम chlorophyll may be present, and these bacteria, और जिसमें chlorophyll होगा, bacteriochlorophil हो या chlorobium chlorophyll हो, so in that type of bacteria अगर वहां पे chlorophyll है, definitely they will be the autotrophs. Rest other all are hetero भी नहीं बोल सकते आप उसमें. आप exactly we have just seen varied range of nutrition, saprophytes, parasitic, बहुत तरह के nutrition they can derive in many ways. Okay, so but those having the बैक्टीरियोक्लोरोफिल हो या क्लोरोबियम क्लोरोफिल हो, so they will be the autotrophs. Now let's see that how do bacteria reproduce. अगर reproduce करे vegetatively, so vegetative reproduction अगर होगा, okay, asexual reproduction, so by fission, and asexual reproduction अगर हो by endospores. Okay, and then sexually if the bacteria are reproducing, then by conjugation and transformation. Two different process which we'll study in detail about that. ठीक है, आगे slides में हम लोग पढ़ेंगे. Firstly, bacteria reproduce vegetatively भी करते हैं by fission, and asexually by endospores. Okay, sexually by conjugation and transformation. So some bacteria are responsible for various disease in plants and animals, including man, and several bacteria are beneficial also. So we know bacteria are somewhat, they are useful also, and few bacteria they are harmful also. Okay, so bacteria are cosmopolitan in distribution, means बहुत अलग अलग environment में पाए जाते हैं. So simply we can say they have cosmopolitan distribution. It can occur in the soil, in the water, in the animal's body. Animal के body के ऊपर भी पाए जा सकते हैं, animal के body के inside also, in some plants also, and they can withstand wide range of temperature. ठीक है, wide range of temperature can be tolerated by these bacteria. Okay, in snow में भी रह सकते हैं up to -80 degree centigrade, and in the hot water spring, hot water में भी पाए जा सकते हैं, and even they can tolerate 78 degree centigrade temperature. Now depending on the species, कौन सा species है bacteria का, so the size of the bacteria is also varying. Average size of the bacterial cell is about 0.5 micrometer to 1 micrometer. ठीक है, so these are the basic characteristic features of bacteria. Now let's see what are the different shapes of the bacteria. Okay, firstly अगर बैक्टीरिया की शेप के बारे में बात हो, so bacteria they have the various, जो 4 कॉमन शेप के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, that is coccus which is round shape, round form में जो बैक्टीरियाज होते हैं. Okay, bacillus rod shape के होते हैं, so that all will discuss. Let's see what is coccus. बैक्टीरिया coccus क्या है. ठीक है, राउंड फॉर्म वाले बैक्टीरिया को कॉकस बोलते हैं. So these bacteria they are spherical in structure. Okay, they are spherical, ellipsoidal और ovoid या round भी हो सकते हैं. When this bacterium occurs singly, अगर यही
राउंड शेप के जो बैक्टीरियाज है अगर सिंगल आपको देखने मिल रहे सो दे आर मोनोकॉकस, अगर सिंगल है देन मोनोकॉकस। ओके, अगर इसी को आप और एक बैक्टीरिया जुड़ गया मींस टू बैक्टीरियाज आर देयर, राउंड शेप बैक्टीरियाज एक साथ अगर आपको दिख रहे हैं सो सिंपली वी कैन राइट डिप्लोकॉकस। क्या लिख सकते हैं? डिप्लोकॉकस। ओके, बट फॉर अगर चार एक साथ हो, ठीक है, दिस राउंड शेप बैक्टीरियाज आर 4 इन नंबर टुगेदरली प्लेस्ड सो दे आर नोन एज टेट्राकॉकस। सो सिंपली इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? टेट्राकॉकस। ओके, देन इफ इट इज अकरिंग इन क्लस्टर, क्लस्टर में अगर मिलते हैं आपको सो स्टेफाइलोकॉकस चेन के फॉर्म में अगर मिल रहा है देन स्ट्रेप्टोकॉकस। सो व्हेन द कॉकस फॉर्म अपीयर इन अ ग्रुप ऑफ टू, ठीक है, टू के ग्रुप में मिलेगा सो डिप्लोकॉकस, वन के सिंगल इट इज प्रेजेंट मोनोकॉकस। एंड दीज बैक्टीरिया दैट इज अ कॉकस फॉर्म के जो बैक्टीरिया है, स्फेरिकल शेप ओवॉइड शेप के जो बैक्टीरियाज है, टेट्राड के फॉर्म में अगर हो, चार हो एक साथ टेट्रोकॉकस, चेन हो स्ट्रेप्टोकॉकस, एंड ग्रेप लाइक क्लस्टर इज देयर, ठीक है, ग्रेप लाइक क्लस्टर लाइक दिस देन स्टेफाइलोकॉकस। ठीक है, ग्रेप लाइक ये दिख रहा है सो दिस इज स्टेफाइलोकॉकस। एंड क्यूबिकल, ठीक है, क्यूब बना रहा है, 8 का एक साथ क्लस्टर हो या टोटल 64 हो, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सो दे आर नोन एज सार्सिना। सार्सिना, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर बैक्टीरिया जो इस फॉर्म में हो तो दे आर नोन एज सार्सिना। एग्जाम्पल्स जो है स्टेफाइलोकॉकस ऑरियस, ठीक है, अगर आप कॉकस का एग्जाम्पल पूछोगे सो दैट इज स्टेफाइलोकॉकस ऑरियस। डिप्लोकॉकस निमोनिया, ठीक है, डिप्लोकॉकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकॉकस फायोजीन्स, सो दीज आर द कॉमन बैक्टीरियाज which are coccus shape, that is spherical shape के bacteria. Now we'll study about the different other shapes of the bacteria, that is bacillus, that is a rod shaped bacteria को bacillus बोलते हैं. So these bacterial cells they are elongated, थोड़े long होते हैं, not spherical shape. Okay, so they are elongated structures होते हैं इनके, or simply we can say cylindrical, rod like, okay, and straight. Rod like, cylindrical, straight, and bacillus occur singly or in pair also. Single भी मिल सकते हैं, pair में भी मिल सकते हैं. Single अगर हो, okay, then that is cocobacillus, यहाँ पे आप देख रहे हो. Okay, then single है, that is bacillus. Two in a pair, two rod-shaped bacteria are placed together, it is diplobacillus. Okay, जैसे spherical shape में हमने पढ़ा था डिप्लोकॉकस, वैसे यहाँ पे डिप्लोबैसिलस. नेक्स्ट प्लासिड्स, देन स्ट्रेप्टोबैसिलस. स्ट्रेप्ट मींस चेन लाइक, ठीक है, चेन लाइक फॉर्मेशन दिख रहा है रॉड शेप बैक्टीरिया का, तो दिस इज स्ट्रेप्टोबैसिलस. सो दे अकर लाइक अ स्टैक. स्टैक मींस एक के ऊपर अरेंज हो, वन ओवर द अनदर, सो दैट इज नोन एज प्लासिड बैसिलस. और इन द फॉर्म ऑफ चेन देन स्ट्रेप्टो. एंड एग्जाम्पल इज बैसिलस एंथ्रेसिस एंड साल्मोनेला. ठीक है, साल्मोनेला, बैसिलस, एंथ्रासिस, ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? दैट इज बैसिलस, रॉड शेप बैक्टीरिया के एग्जांपल है. नाउ नेक्स्ट कम्स व्हाट इज द अनदर शेप बैक्टीरिया, दैट इज स्पाइरलम. बैक्टीरिया स्पाइरलम, स्पाइरल शेप के बैक्टीरियाज होते हैं. सो बैक्टीरियल सेल्स आर स्पाइरली कॉइल्ड. ठीक है, स्पाइरल शेप में आपको मिलेंगे. कॉर्कस्क्रू, ठीक है, एग्जाम्पल इज स्पाइरलम एंड रोडोस्पाइरलम. ठीक है, एग्रीगेशन इसमें नहीं होता है, क्लस्टर में ग्रुप में एक या दो, एक से ज्यादा ग्रुप में नहीं मिलते हैं. ठीक है, सो दिस स्पाइरलम, स्पाइरला, दैट इज हेलिकल शेप और कॉर्कस्क्रू फॉर्म बैक्टीरिया. ओके ओके, नाउ विब्रियो, अनदर शेप बैक्टीरिया के जो है दैट इज कॉमा शेप. कॉमा शेप का होता है विब्रियो. बैक्टीरियल सेल अपीयर्स लाइक अ कॉमा. ओके, सो इट मे बी कर्व्ड और रॉड शेप के भी हो सकते हैं बैक्टीरियम, और मे बी स्पाइरल शेप बैक्टीरियम विद अ सिंगल टर्न. कॉमा के जैसा होगा, लेकिन ज्यादातर ये बैक्टीरिया कैसे पाए जाते हैं? इस तरह से. ओके, और इसमें स्पाइरल भी हो सकता है एंड पे, तो स्पाइरल शेप के भी दिख सकते हैं थोड़ा, और रॉड शेप का भी दिख सकता है, बट जनरली इट इज कॉमा शेप. सो एग्जाम्पल इज विब्रियो कॉलेरी. ठीक है, विब्रियो कॉलेरा. सो दिस इज रॉड, दिस इज व्हाट, it is comma shaped bacteria. Okay,
Next, we'll come to the cell structure, that is the bacterial cell के structure के बारे में in detail we'll study now. Okay, just an outline, already characteristic features जो हमने पढ़ा बैक्टीरिया का we have seen, but in detail we'll cover now. So bacteria cell structure किसका? Bacteria's का. Okay, so a bacterial cell is covered by a mucilage. ठीक है, बैक्टीरिया का जो सेल होता है एक म्यूसिलेज से कवर होता है, स्टिकी सब्सटेंस टाइप. ओके, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोइड होता है, प्लाज्मिड होता है, इंक्लूजन बॉडीज होते हैं, फ्लैजेला होता है, देन पिलाई एंड देन फिम्ब्रिए. सो दीज आर द मोस्ट important features which you will see in the bacterial cell. Now membrane bounded organelles, it should be absent. Membrane bounded organelles, they are absent. Firstly we'll come to the most outermost structure. ठीक है, एक जो बैक्टीरियल सेल का outermost structure पे जो आप देखते हो hair like structure इस तरह से जो आपको दिख रहा है, so this is known as pili. ठीक है, so what is pili? These are organs of attachment and consist of the protein that is known as pillin. This pili, this consists of the protein. ठीक है, pili, this contains the protein that is known as pillin. Okay, so they helps in attachment. So these develop in the response to F positive or fertility factor in the gram negative bacteria में present होते हैं generally, and they help in attaching to the recipient. ठीक है, रेसिपेंट के बॉडीज में अटैच करने में हेल्प करता है, एंड फॉर्मिंग कॉन्जुगेशन ट्यूब. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है, सो इन दैट वे ऑल्सो, ठीक है, इट हेल्प्स इन अटैचमेंट. नाउ ऑलरेडी वी हैव सीन कि साइटोप्लाज्म तो मेस होता है, ठीक है, सेल वॉल होते हैं, कैप्सूल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोइड. ओके, सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स फीचर विच विल सी इन द बैक्टीरियाज. राइबोसोम्स, डेफिनेटली इट इज प्रेजेंट. राइबोसोम्स कौन सा होता है? 70S. ठीक है, 70S राइबोसोम्स इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल. ईच राइबोसोम्स हैज 2 subunit, that is 50S and the smaller one is 30S. Okay, so each ribosomes, already हमने पढ़ा है कि जो 70S and 80S ribosomes are present, but here जो ribosomes है 70S. Each ribosomes has 2 subunit, that is either the larger one 50S होगा और smaller one 30S होगा. Okay, now ribosomes take part where? In protein synthesis. तो protein बनाने में कौन help करता? These ribosomes. Next come flagellum, which is present in the bacterial cell. The flagellum is the organ of motility in the bacteria, means movement में help करता है. ठीक है, so movement is possible because of this flagella. Okay, now each flagellum is about 4 to 5 micrometer in length and arises from the basal granules. From where it is arising? From the basal granule, and that is known as blepharoblast. कहाँ से originate करता है flagella? Blepharoblast. Now each flagellum is made up of 3 parts. एक जो flagella होता है उसका भी 3 part होता है, that is the basal body, hook and the filament. Okay, so basal body, hook and the filament, these are the 3 important part which is the flagella made up of. As you can see, ये जो flagella आपको दिख रहा है whip like structure, ठीक है, whip like जो दिख रहा है. Okay, so that is helping in the movement. वो help करता है movement में, basal body से attach होता है, hook के जैसा होता है, and then filament since वो long thread like होता है. Now, after flagellum, another thing is plasmid, which is present in the bacterial cell. So plasmid self-replicating होता है, ठीक है, it helps in self-replication and extra chromosomal DNA है ये, ठीक है, extra chromosomal DNA segments को बोलते हैं plasmid. अगर ये bacterial cell है, okay, and this is the genetic material of the bacterial cell. Apart from that, there is a circular DNA के फॉर्म में आपको दिखेगा plasmid. It is plasmid. Okay, double stranded circular and naked DNA. Now plasmid provide unique phenotypic character to the bacteria. So this plasmid, this is self-replicating extra chromosomal segment है ये. Then comes inclusion body. Inclusion body, they are the non-living structure present in the cytoplasm. On the basis of this nature, inclusion bodies which are present, जो bacterial cell में दिखता है, so that can be of 3 type.
फर्स्टली गैस वैक्यूल्स भी हो सकता है, ठीक है, इनऑर्गेनिक इंक्लूजन एंड फूड रिजर्व्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल, ठीक है। सो टुगेदरली इसी गैस वैक्यूल, इसी इनऑर्गेनिक इंक्लूजन, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन दिस साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट होगा, तो गैस वैक्यूल्स भी हो सकता है, ओके, गैस वैक्यूल्स भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स भी हो सकता है, देन फूड रिजर्व्स कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट, और टुगेदर दे कैन बी कॉल्ड एज इंक्लूजन बॉडीज, ओके। प्लाज्मिड जो कि सर्कुलर डीएनए था। अब देखोगे न्यूक्लियोइड क्या है, इट इज ऑल्सो द जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, सो इट रिप्रेजेंट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट्स, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। तो प्रोकैरियोट्स के जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड बोलते हैं क्योंकि उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए डुप्लेक्स। यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है विच इज सुपर कॉइल्ड, ओके, विच इज जस्ट सुपर कॉइल्ड फोल्डेड होता है with the help of RNA and polyamines, okay, to form a spherical or oval shaped structure. So इस तरह से आप जो फोल्डिंग्स देख रहे हो सुपर कॉइल्ड है ये, ठीक है, दे आर सुपर कॉइल्ड, दैट इज न्यूक्लियोइड, ओके। न्यूक्लियोइड क्या है, सुपर कॉइल्ड है, और किसके थ्रू, आरएनए एंड पॉलीअमाइंस के हेल्प से, ठीक है। सो इट इज जस्ट ओवल के जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, डीएनए यहाँ पे नेकेड है, इसमें जो डीएनए होगा दैट इज नेकेड डीएनए, ओके, एंड विदाउट हिस्टोन। यहाँ पे बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए होता है उसमें नो हिस्टोन, कोई हिस्टोन नहीं होता है, ओके। नाउ अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर विच इज विजिबल इन द बैक्टीरियल सेल दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। इट इज द इनरमोस्ट म्यूसिलेज लेयर, इनरमोस्ट लेयर होता है सेल एनवेलप का। अगर आप बैक्टीरियल सेल को देखोगे, मान लो ऊपर वाला कैप्सूल हो गया, उसके जस्ट इनर साइड में आपका क्या हो जाएगा, सेल वॉल हो गया, देन इज द सेल मेम्ब्रेन, ओके, देन द आउटर मोस्ट म्यूसिलेज लेयर ऑफ द सेल एनवेलप, एंड इट मे बी क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड, स्लाइम लेयर के जैसा हो सकता है, थिक एंड टफ भी हो सकता है। इट इज मेड अप ऑफ नॉन सेल्यूलोसिक पॉलीसैकेराइड्स विथ और विदाउट द प्रोटीन, अमीनो एसिड का प्रोटीन हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम डेसिकेशन एंड फैगोसाइटोसिस से बचाता है, ड्रग्स से, टॉक्सिक केमिकल्स एंड ऑल से बचाता है, दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। इट प्रोवाइड अटैचमेंट, इम्यूनोजेनिटी एंड वायरुलेंस टू द सेल। सो ग्लाइकोकैलिक्स दे जस्ट आउटर मोस्ट म्यूसिलेज लेयर है, एनवेलप है सेल का, ओके। नाउ साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म इट इज क्रिस्टलो वी कैन से कोलॉइडल कॉम्प्लेक्स है। वैसे तो साइटोप्लाज्म ऑल सेल में आप जैसे देखते हो, सेल मेम्ब्रेन के जो फ्लूइड के अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज, सो बैक्टीरियल सेल में आप देखोगे क्रिस्टालो एंड कोलॉइडल कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है, द प्रोटोप्लाज्म इंक्लूडिंग द न्यूक्लियोइड। सो फॉर्म्स ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म का ही तो पार्ट होता है, साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस पार्ट, तो यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है तो बट क्या है, न्यूक्लियोइड है, ओके। सो प्रोटोप्लाज्म एक्सक्लूडिंग इट्स न्यूक्लियोइड, तो न्यूक्लियोइड को अगर हटा दो और प्रोटोप्लाज्म दैट इज कंटेनिंग, उसी को आप बोल सकते हो साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एंड सैप वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन दिस बैक्टीरियल सेल। नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात करो, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है बैक्टीरियल सेल के भी प्लाज्मा, एंड मेड अप ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। बैक्टीरियल सेल्स के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये फॉस्फोलिपिड का बना होता है विद द प्रोटीन ऑफ वेरियस टाइप। नाउ इट इज मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव एंड टेक पार्ट इन द रेस्पिरेशन, देन सिंथेसिस ऑफ द लिपिड, ठीक है, एंड द सेल वॉल कंपोनेंट। सेल वॉल भी बनता है इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मदद से। अगर आप देखोगे बैक्टीरियल सेल के जो सेल मेम्ब्रेन है, सो इट इज फॉस्फोलिपिड, ठीक है, बाइलेयर, इस तरह से स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगा, ठीक है। दिस इज द लिपिड पार्ट, ओके। सो जो सेल मेम्ब्रेन होगा बैक्टीरियल सेल का, इस तरह से डबल लेयर दैट इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर
का बना होगा, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा, सिंथेसिस प्रोटीन का, बहुत सारे लिपिड्स बनाने में हेल्प होगा, एंड सेल कंपोनेंट, सेल वॉल के कंपोनेंट्स भी बनेंगे. सो व्हाट इज सेल वॉल? ठीक है, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है इट इज वेरी रिजिड, ओके, रिजिड एंड सॉलिड, एंड इट कवर्स द होल बैक्टीरियल सेल एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड शेप टू द बैक्टीरियल सेल. सपोर्ट प्रोवाइड करना, शेप प्रोवाइड करना, रिजिड होता है, फिक्स मींस वेरी सॉलिड, एंड प्रोटेक्ट द सेल कंटेंट. सेल इनर में, बैक्टीरियल सेल के अंदर जितने भी राइबोसोम्स है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है, so it is protecting all the cell content from external stress and from lysis also. ठीक है, lysis resulting from the osmotic pressure की वजह से जो बैक्टीरियल सेल में किसी तरह का जो ब्रेकडाउन होता उससे भी बचाता है. The bacterial cell wall is made up of peptidoglycan, okay, which is mucopeptide or murin. ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकैन या म्यूरिन का बना होता है, और पॉलीसैकेराइड्स हो, प्रोटीन हो या लिपिड्स. So it is made up of all this. So as you can see, gram negative bacteria and the gram positive bacteria is present. Here you can see outer membrane जो है बैक्टीरियल सेल का, ठीक है, नेगेटिव में आप देख रहे हो. देन पेप्टिडोग्लाइकैन का एक लेयर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, बट इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दे आर मेड अप ऑफ, जो पेप्टिडोग्लाइकैन का लेयर है वो बहुत थिक है. ठीक है, तो मेनली द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो पेप्टिडोग्लाइकैन है इट इज वेरी थिक, ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकैन के साथ साथ लिपोप्रोटीन्स भी होते हैं. ओके, नाउ we'll see what is nutrition, what type of the nutrition we can see in this bacteria. So many biologists, they have recognized two type of the bacteria based on their nutrition. So nutrition के बेस पे बैक्टीरिया को डिवाइड कर लिया गया है. One is autotrophic bacteria and the other should be heterotrophic bacteria. ठीक है, what are autotrophic? As the name suggests, autotrophs means they can prepare their own food. मतलब उनमें क्लोरोप्लास्ट जरूर होगा. ठीक है, so some bacteria obtain energy from the oxidation of some chemical substance. Okay, so यहाँ पे एनर्जी मिल रहा है but by oxidation of the chemical substance, and this energy is utilized during the photosynthesis. तो photosynthesis में हेल्प यहाँ पे कौन कर रहा है? केमिकल सब्सटेंस. सो chemiosynthesis हो रहा है यहाँ पे. ओके, so some bacteria they are getting energy from oxidation, so they are known as chemiosynthetic bacteria. Example of chemiosynthetic bacteria: Nitrosomonas, then Clostridium. Some autotrophic bacteria are known as photosynthetic bacteria भी बोलते हैं. Photo means light, जो लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर कर सके, सो दैट ऑल आर फोटोसिंथेटिक. एंड जो केमिकल के मदद से अपना फोटो या फूड प्रिपेयर करे, सो दे आर केमियोसिंथेटिक. ओके, सो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया दैट इज क्लोरोबियम बैक्टीरिया, देन क्रोमोमैटियम बैक्टीरिया. ठीक है, रोडोस्पाइरलम ऑल्सो ऑटोट्रॉप्स है, सो दे ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द लाइट ड्यूरिंग द फूड सिंथेसिस. सो इन्हें लाइट से एनर्जी मिलता है. नाइट्रोसोमनस एंड क्लॉस्ट्रीडियम को केमिकल से एनर्जी मिलता है, ऑक्सीडेशन से मिलता है. सो फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया also they possess two type of photosynthetic pigments होते हैं. photosynthesis वो कर रहे हैं, ठीक है. so that means light is helping them. so what is present in them? they contain photosynthetic pigment, that is bacteriochlorophyll present होता है, या तो बैक्टीरियोफियोफाइटिन प्रेजेंट होगा. ठीक है, या तो बैक्टीरियोक्लोरोफिल है या तो बैक्टीरियोफियोफाइटिन, दैट इज क्लोरोबियम क्लोरोफिल. ठीक है, सो दीज टू टाइप ऑफ द पिगमेंट दे आर हेल्पिंग द बैक्टीरिया टू परफॉर्म फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ठीक है, तो ये फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के पास ही प्रेजेंट होता है, दिस बैक्टीरिया क्लोरोफिल एंड क्लोरोबियम क्लोरोफिल. ओके, नाउ ये हो गया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. Now heterotrophic bacteria are also present. Heterotrophs है मतलब they cannot prepare their own food. So majority of the bacteria are unable to synthesize organic food material on their own. Majority of them cannot prepare their food and obtain them from the outside sources. और outside means that means any other organism has produced और उससे derive कर रहा है. So these are the heterotrophic bacteria. ठीक है, तो heterotrophic bacteria are of three types. कुछ पैरासिटिक बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ सैप्रोफिटिक बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज भी होते हैं. सो
पैरासिटिक बैक्टीरिया जो होंगे, डेफिनेटली दिस बैक्टीरिया विल लिव ऑन द अनदर, जो होस्ट बॉडी के ऊपर रहेगा, ठीक है, एंड फ्रॉम द होस्ट बॉडी दिस पैरासिटिक बैक्टीरिया विल derive the nutrition. Saprophytic bacteria, they will be found on the dead and decaying matter. Then comes symbiotic, ठीक है, symbiotic जिसमें क्या होगा, both the organism will be benefited. Now Vibrio cholera इसी heterotrophic type of nutrition perform करता है. Then Pseudomonas bacteria, Rhizobium bacteria, so all these comes in the heterotrophic bacteria, ठीक है. So these Vibrio, Pseudomonas, Rhizobium ये अपना food नहीं बना सकता है, ठीक है. So either parasitic, saprophytic and symbiotic में ही इसी तरह से वो अपना food prepare करता है, means derive करता, not prepare. Now when there comes the discussion about the reproduction in the bacteria, तो bacteria asexually reproduce करते हैं, but how? By the process of binary fission, ठीक है. Sexually reproduce में करते हैं, but the most important thing, there happens conjugation. Now what is asexual reproduction and how this asexual reproduction take place in the bacteria, ठीक है. So asexual reproduction होता है bacteria में, but how? By the process of binary fission. Okay, so during favorable condition, what happened? The bacteria reproduce. Favorable है condition, ठीक है. Mark this word, favorable condition. The bacteria commonly reproduce vegetatively. लेकिन अगर condition favorable नहीं हो, तब spore formations होते हैं. But the favorable condition is there, then binary fission is the most important process of the asexual reproduction. The bacterial cell divides simply into the two. As the name suggests, binary, bi means two. एक बैक्टीरियल सेल दो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है. सो द सेल डिवाइड सिंपली इनटू द टू इंडिपेंडेंट डॉटर सेल. सो हियर डीएनए रेप्लिकेट करेगा पहले, ठीक है. बिफोर द सेल डिवीजन द डीएनए विल रेप्लिकेट एंड देन द क्रोमोसोम्स आर गेटिंग सेग्रीगेटेड, ठीक है. देन आप देख रहे हो एक पार्टीशंस हो रहे हैं एंड फाइनली द टू डॉटर सेल्स हैव बीन डिवाइडेड, जेनेटिकली आइडेंटिकल, क्योंकि ये एग्जैक्ट कॉपी होता है पेरेंट का. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इफ यू रिमेंबर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, एग्जैक्ट कॉपी बनता है अपने पेरेंट का, ठीक है. सो बैक्टीरियल सेल डिवाइड सिंपली into the two independent daughter cells and the cell divide into two halves by constriction. Two half में cell divide कर रहा है. पहले एक constriction यहाँ पे आप देख रहे हो. Firstly, the constriction is marked. Okay, simple cell है, ठीक है, bacterial cell. तो यहाँ पे एक folding type का आप देख रहे हो, मार्क आ जाता है constriction, जहां से वो divide करेगा. Okay, so that point of constriction is very helpful क्योंकि division वहीं से होना है. So asexually इसी binary fission के process से bacteria are just dividing. Now sporulation, ठीक है, ये भी by this process also the bacteria they reproduce. So bacteria they produce several types of spores and what are that spores? That are gonidia, या sporo, ठीक है, sporangiospores, then arthrospores, conidia, cyst, endospores. So these are the various types of the spores through which the bacteria reproduces. Okay, now we'll come to endospore formation. ठीक है, किस तरह से endospores बनते हैं and how do the bacteria reproduces through endospores. So endospores क्या है? Normally अगर environmental conditions support ना करे बैक्टीरिया के growth में या reproduction में, so during the unfavorable environmental condition, what happened? The bacteria, ठीक है, they develop a thick and hard coat over their cells, ठीक है, and highly resistant spores बनाते हैं, which are known as endospores. तो जो spores बनता है वो उसके ऊपर एक hard cover रहता है, which is very thick, okay. So and it is even resistance to the harsh environmental condition. Now you can see in this diagram here, ये बैक्टीरियल का क्रोमोसोम है, बैक्टीरिया का डीएनए है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल है जिसके अपने डीएनए भी है, ओके, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए है, ओके. नाउ द फर्स्ट थिंग ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन व्हाट विल हैपन, क्रोमोसोम दैट मींस द डीएनए, जिसके अंदर डीएनए है, दैट डीएनए विल रेप्लिकेट. तो फर्स्ट स्टेप दैट विल टेक प्लेस, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन. तो पहला स्टेप में क्या होगा, डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करेगा एंड एज यू कैन सी नाउ, यू कैन यहाँ देख रहे हो दो डीएनए दिख रहा है आपको, ठीक है. सो इसके बाद अब क्या होगा, एंडोस्पोर फॉर्मेशन. एंडोस्पोर फॉर्मेशन में क्या होगा, एज यू कैन सी जो जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का उसके अराउंड, ठीक है, सराउंडिंग इट देयर इज अ हार्ड थिक वॉल डेवलपमेंट विच इज रेजिस्टेंट.
तो स्पोर्स बनते हैं जिसके ऊपर एक हार्ड कवर रहता है, दैट इज नोन एज एंडोस्पोर्स. ओके, एंड इन ईच बैक्टीरियल सेल सिंगल एंडोस्पोर इज फॉर्म. एक बैक्टीरियल सेल में एक एंडोस्पोर्स बनते हैं, एंड इट इज हाईली रेजिस्टेंस टू वेरी हाई टेम्परेचर. इवन दैट एंडोस्पोर, ठीक है, तो वो एंडोस्पोर क्या करता है, जब कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो इट रिमेन डॉर्मेंट. ओके, एंड जस्ट इट वेट फॉर द सुटेबल कंडीशन. जब कंडीशन सुटेबल हो, देन अगेन दैट वो जो एंडोस जस्ट कवर है एंडोस्पोर का, ठीक है, दैट ब्रेक्स एंड देन द बैक्टीरिया गेट रिलीज्ड. ओके, so it is highly resistant to very high temperature, that is 100 degree centigrade भी endospores can tolerate, and even the very low temperature like minus 100 degree centigrade can also be tolerated by that endospores. Okay, so even toxic chemical and harmful chemicals, acid, all can be tolerated. मतलब ये बैक्टीरिया, ये जो एंडोस्पोर है, they have the resistance. So during favorable condition, जब तक favorable condition नहीं था, endospores बना. Now when the condition is favorable, the endospores germinate. Endospore will germinate. Okay, and then outer layer germination जब होगा इसका, तो outer layer जो इसका है वो rupture हो जाएगा, फट जाएंगे, ठीक है, and then the new bacterial cell will be formed. So in this way, the bacteria reproduces by spore formation, that is sporulation. Now we will see another step, that is sexual reproduction कैसे होता है, ठीक है. So how do the bacteria reproduce sexually? So that we'll see. Typical sexual reproduction is absent in the bacteria, लेकिन ठीक है, because the absence of the meiosis, bacteria में कोई meiosis नहीं होता है, so and neither there is gamete formation, so we cannot say that real or a true sexual reproduction take place, but it occur by parasexual process, that is known as genetic recombination होता है, ठीक है, genetic recombination. Okay, so it occurred in the three ways. It is absorption of the DNA segment from the surrounding medium. तो bacterial cell जो है वो surrounding cell से they will just acquire or absorb the DNA, and further the more process will go on. That is, first step होगा transformation, or by the process of transduction and conjugation. By all these three ways, the bacteria reproduces parasexual ways. Okay, so we will see what is transformation, what is transduction. First one is transformation. Transform होना है. So some bacteria can incorporate their genetic material from the other bacteria. ठीक है, दूसरे बैक्टीरिया से कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, they derive the genetic material of the other bacteria. Okay, so it is absorption of the DNA segment from the surrounding medium by the living bacteria. Now you can see gene to be एक ये डोनर बैक्टीरिया है, ठीक है, आप बोल सकते हो, जहां से, और डिफरेंट बैक्टीरिया, अदर बैक्टीरिया फ्रॉम वेयर द जेनेटिक मटेरियल हैज टू बी डेराइव्ड. ओके, तो जीन टू बी, ये बैक्टीरिया का जीन है विच हैज टू बी ट्रांसफॉर्म्ड. नाउ, और दैट जीन विल बी प्रेजेंट इन द प्लाज्मिड. एज यू नो, जो प्लाज्मिड होता है वो सर्कुलर डीएनए है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है. वैसे तो ये आप देख रहे हो, ये दिस इज द न्यूक्लियस वन जिसमें क्रोमोसोम भी होगा, बट ये सर्कुलर जो डीएनए देख रहे हो, दैट इज नोन एज प्लाज्मिड, वहीं पे आपको मिलेगा द जीन दैट हैज टू बी ट्रांसफॉर्म्ड. सो वी कैन सर्कुलर डीएनए में कट लगा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. ओके, एंड नाउ दैट हैज टू बी ट्रांसफॉर्म्ड. उसे अब दूसरे बैक्टीरियल्स में इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है. प्लाज्मिड ऑफ द बैक्टीरियल सेल, ये बैक्टीरियल सेल का प्लाज्मिड है. ओके, नाउ एंजाइम लाइगेज इज यूज्ड. बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया में, ठीक है, the bacteria which has to be introduced with the another genetic material, दूसरा का genetic material जब इस बैक्टीरिया में डालना है, that can be done. Again वहां पे हमें लाइगेज एंजाइम के थ्रू कट करना होगा. Then this you can see, यहाँ पे जो आप ऐड करोगे डीएनए का सेगमेंट, it can be introduced. Okay, now the gene from the bacterial cell has been added in the plasmid of the ओरिजिनल पेरेंट, जिसमें रेप्लिकेशन आपको देखना है, ठीक है, जहां पे ट्रांसफॉर्मेशन होना है उस बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है. सो सम बैक्टीरिया कैन इनकॉर्पोरेट द जेनेटिक मटेरियल और द डीएनए मटेरियल फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया. तो ये ओरिजिनल बैक्टीरिया है, एंड दिस इज द अनदर बैक्टीरिया फ्रॉम विच द जेनेटिक मटेरियल इज बीइंग डिराइव्ड. नाउ इट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ द डीएनए सेगमेंट इज बीइंग डन. नाउ इट वाज फर्स्ट, दिस मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय फ्रेडरिक ग्रिफ्ट. ठीक है, in year 1928 the scientist Frederick Griffith has firstly observed this, but where, in
डिप्लोकोकस निमोनिया, ठीक है, दिस इज अ बैक्टीरिया जिसमें फर्स्ट टाइम द साइंटिस्ट ग्रिफ्ट he has observed this transformation method. So this event of transformation was later studied by other scientists also, that is Aver, McCarthy and MacLeod, ठीक है, in year 1944. और आगे चल के several other scientists these have who has also worked on the same, ठीक है, जो ग्रिफ्ट ने वर्क किया उसी पे, and they proved what, that the DNA is the transforming principle during the transformation. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन में डीएनए है जो ट्रांसफॉर्म होता है. ओके, सो एज यू कैन सी दिस इज द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन शोइंग हियर. ये डोनर सेल है, ठीक है, फ्रॉम वेयर द डीएनए सेगमेंट हैज टू बी टेकन एंड इंट्रोड्यूस्ड इन द रेसिपिएंट सेल. तो यहाँ पे किस चीज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है? डीएनए के सेगमेंट्स ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं. ओके, एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स आर देयर. So with the help of that, the recipient cell will receive or absorb the DNA segment from the donor one. Okay, तो यहाँ पे transformation हो रहा है. This is the method of the reproduction in the bacteria. Now another method that we'll see, that is transduction. अब इस transduction में क्या होता है? This phenomenon, the transduction के through भी जो bacteria reproduce करते हैं, it was first studied in Salmonella typhimurium by Gender and Ledberg in year 1952. So what they have done, they have seen, उन्होंने क्या देखा कि ये ट्रांसडक्शन के प्रोसेस में किस तरह के चेंजेस आते हैं. So the transfer of the material, that is a genetic material, take place again. लेकिन किस तरह से ट्रांसफर होता है वो देखना है हमें. Okay, so the transfer of the genetic material take place from one bacterium to the another. एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है, but by the help of, so that is done by the agency of phage. ठीक है, बैक्टीरियोफेज की मदद से होता है. Without this bacteriophage, if the transfer is taking place, so we cannot call it transduction. So transduction, how does it take place? By the agency that is known as bacteriophage. तो इस बैक्टीरियोफेज की मदद से ही ट्रांसडक्शन होता है. Now a recombinant, इसके बाद क्या होता है? जैसे ही बैक्टीरियोफेज, okay, they will help in the transduction or transferring of the genetic material. So a recombinant strain, that is a recipient bacterium, is produced, ठीक है, by the transduction of the DNA fragment, and it is incorporated into the genetic material of the recipient. तो recipient जो है उनके genetic material में the DNA has to be introduced, recombinant strain, ठीक है, is being produced by the recipient cell, and this is done by the help of the bacteriophage. Okay. So here bacteriophage plays a very important role in the transduction. Next come the most important, that is conjugation. How does the bacteria reproduces? By the process of conjugation. So firstly, this method of the reproduction was first reported by Ledberg and Tom in year 1949. In which bacteria? Escherichia coli. ठीक है, E. coli बैक्टीरिया में पहली बार conjugation का process देखा गया. And what does happen in this conjugation? So this conjugation occur between the donor, ठीक है, donor cell एक होता है and one is the recipient, ठीक है. So the donor cell will be the male. Donor cell जो यहाँ पे होते हैं bacteria, that bacteria is F positive, that is the male, and the recipient cell, that is F negative. So we can mark here the donor are F positive and the recipient, they are F negative. Okay, so male cells have the sex pili on the surface and the fertility factor. So what is this F? F represent the fertility factor. So sex pili and the fertility factor, this is present in the male, ठीक है, and but it is absent in the female. So in the plasmid, while the female cell lack these both, the female cell, यहाँ पे जो recipient cell female होगा उसमें both fertility factor and sex pili both will be absent. So this has to be introduced in the female. जो absent है female में fertility factor and sex pili, it has to be introduced. But how? The F factor is a circular DNA. तो F factor क्या है? एक तरह का circular DNA molecules है, ठीक है, which is self-replicating capability is present and freely present in the cytoplasm. It is present in the cytoplasm. So if the male and the female cells यहाँ पे जितने भी bacterial cells है, they comes near, so pilus, ठीक है, pile which is the structure, ठीक है, that make a connection between the two bacterial cell. तो यहाँ पे pilus ही connection बनाता है between the two
bacterial cell and helps in establishing conjugation tube. So this is the conjugation tube. ये conjugation tube, ठीक है. This conjugation tube is the extension of the pilus, and then finally here the female cell, bacterial cell, will receive the fertility factor. Exchange of the fertility factor and the sex villi will take place by this conjugation method. Again you can see the same diagram, थोड़ा detail में है. F factor which is donor, ठीक है, F factor positive one which is representing the male bacterial cell, and F negative is representing the recipient cell, that is a female. So यहाँ पे F plasmid है, ठीक है, fertility factor के लिए, and this is pilus, this structure जहां से conjugation होगा. So what happened? Pilus is the of the donor. Here the pilus of the donor attached to the recipient cell, and then the pilus contract and then together they comes in contact. Finally, जैसे आप देख रहे हो, this is the chromosomal DNA and एक plasmid था which is a circular DNA, ठीक है. So one strand of this F plasmid, ये F plasmid का एक strand जो है, it will be transferred to the female, okay, or the recipient cell. So only one plasmid, one strand of the plasmid, ठीक है, it is being transferred to the recipient. And finally, again, ठीक है, जैसे ही it is been transferred to the female, now the original, that is the F plus, that is the male bacterial cell, will again develop the strand, जो कि strand एक already it is passed on. So the donor will synthesize the complementary strand, okay, of the plasmid, ठीक है, complementary strand बना लेगा उस plasmid का जो कि already एक strand transfer हो चुका है. And finally the F negative cells, ठीक है, जो कि recipient cell था, they will synthesize again their complementary strand, ठीक है, and finally it become F positive, और फिर F positive वो फिर से बन गया, ठीक है. So this is all about conjugation method, which is the way how the bacteria reproduces. Now we'll see there are the few bacteria which are very harmful, few are very useful. So we'll come to it. What is the economic importance of bacteria? Economically, how the bacteria can be useful to us? Firstly, we'll see what are the harmful effects of the bacteria. Yes, no doubt the bacteria are harmful. Okay, so in human, the bacteria causes several types of diseases. Okay, tuberculosis, okay, that is caused by the bacteria, that is Mycobacterium tuberculosis. ठीक है, Mycobacterium tuberculosis is responsible for causing the disease, that is tuberculosis. ठीक है, leprosy, it is another disease which is caused by Mycobacterium leprae. Next, cholera caused by Vibrio cholerae. Tetanus, ठीक है, Clostridium tetani, this is the bacteria which is responsible for this disease. Spilus, Tripomena, ठीक है, Pallidum, इसके वजह से होता है. And in animals also, ये तो human की बात हो गई. अब now animals also are suffering from various disease that is caused by the bacteria. First one is anthrax, ठीक है, Bacillus anthracis के वजह से होता है. black leg, ठीक है, it is caused by Clostridium, ठीक है, this is caused, again all these are bacterial disease, means disease are caused by the bacteria, that means they are causing harmful effect. Okay, now few another diseases which are caused in the plants, जो कि plants को affect करते हैं, that is lemon leaves, and even the fruits are affected by one of the disease, that is citrus canker. ठीक है, ये Xanthomonas citri की वजह से होता है, lemons में भी बहुत common है, ठीक है. Then blight disease, it is very common in rice, ठीक है, Xanthomonas orazea के वजह से होता है, this bacteria is responsible. Then in apple tree and rose plant also there is a disease that is known as crown gall disease, और ये होता है Agrobacterium tubefaciens के वजह से, ठीक है. So this Agrobacterium tubefaciens is responsible for crown gall disease. Now few poisons also occur, or poisoning occur due to the production of the toxin by some bacteria, like Clostridium botulinum, ठीक है, like Clostridium botulinum, ठीक है, this causes botulinum disease which will kill the human which kill human by affecting the or respiratory paralysis cause करता है.
this botulism disease. Now some saprophytic bacteria are also there, saprophytes. Okay, so like lactobacillus spoil milk and the milk product. The milk, already we know lactobacillus which is present in the curd. So it has been curd कैसे बनता है? By destroying the milk. ठीक है, milk जब खराब हो जाता है, then it changes into curd. So all because of lactobacillus which is responsible for spoiling milk. Now spirochetes, ठीक है, cytophage, this bacteria detroits cotton fiber, cotton को destroy करता है, and even leathers and wooden articles. So leather, wooden articles, cotton clothes, these are destroyed by spirochetes, cytophage. So in this way, we have seen the bacteria are causing harmful effect in the human, animals, plants, and several plant product, milk products, all are being affected by these bacteria. So now we'll see what are the useful effect of the bacteria. Yes, no doubt, the bacteria are harmful and there are few bacteria are useful also. So useful bacteria में आप देखोगे कि bacteria, they are the natural scavengers. Why they are known as natural scavengers? Because they obtain their nutrition by decomposing the dead bodies, dead plants, dead animals, and even animals के excreta पे भी bacteria they derive their nutrition. So these are used, bacteria, they are used in the fermentation process also. Fermentation industries में भी bacteria का बहुत ही importance रहता है. Like vinegar manufacturing also can be done. So it is done by Acetobacter aceti. ठीक है, this bacteria is very helpful. Okay, now curd making में कौन सा bacteria use होता है? Streptococcus lacti, ठीक है, and lactobacillus. Both this type of the bacteria are helpful in curd making. Now alcohol formation may be Clostridium acetobutyli. So this is very helpful. ठीक है, alcohol के formation में यही Clostridium help करता है. Now some bacteria help in even retting the jute के जो threads है, fibers उन्हें separate करने में. Cotton plants fiber also can be separated by this Clostridium and butyric acid bacteria. ठीक है, so the separated fibers are used in making ropes and all. और ये separation कैसे possible है? By this bacterium, that is Clostridium. Now few more uses are there. The genus Streptomyces, जो bacteria Streptomyces genus में belong करते, so they are used to produce antibiotics. The antibiotics like neomycin, chloromycetin, streptomycetin, ठीक है, so these all are the antibiotics which are used. So these are also produced by the Streptomyces genus bacteria. Okay, so bacteria, they plays very important role even in the nitrogen cycle. ठीक है, so some bacteria which helps in maintaining the nitrogen cycle in the environment, so that are Clostridium bacteria, Azobacter, ठीक है, Pseudomonas, Nitromonas bacteria. So these all are nitrogen fixation bacteria which helps in nitrogen cycle, performing the nitrogen cycle. And some bacteria are even used in the sewage treatment plant. Okay, so few other bacteria, atmospheric nitrogen fixation, ठीक है, in the free state, that can be done by the few bacteria, the nitrogen fixation bacteria which is known as Rhizobium bacteria. ठीक है, nitrogen cycle में this Pseudomonas, Nitromonas, these are helping. And nitrogen fixation bacteria means atmospheric nitrogen can be converted to the soluble form so that it can be used by the plant. So that is done by Rhizobium bacteria. So in this way, these all points for the importance of bacteria. Now, what is Archaebacteria? As we have seen the broad classification of the Kingdom Monera, so Kingdom Monera can be divided into two broad categories, that is Archaebacteria and Eubacteria. So Eubacteria जो था, that was the true bacteria जिसमें आ जाते हैं आपके bacteria, okay, and Cyanobacteria. But Archaebacteria, the another previous part was that, so it differ from bacterium. क्योंकि bacterium जो है वो Eubacteria, true bacteria है. This Archaebacteria are not true, they are the primitive one. Okay, so Archaebacteria differ from the another bacterium. तो ये bacteria से थोड़ा differ करते हैं in their cell wall structure. So the difference comes in the cell wall structure. And as we remember, bacteria जो है, their cell wall is made up of peptidoglycan. But Archaebacteria, they lack the cell wall. ठीक है,
their cell wall lack peptidoglycan. तो आर्कीबैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं प्रेजेंट होता है. Only bacteria when we are talking about peptidoglycan is present. Now in most cases the cell wall, जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं उनके सेल वॉल किससे बना होता है? They composed of non-cellulose polysaccharides and even some protein. So we can mark non-cellulose polysaccharides and some proteins are present in the cell wall of Archaebacteria. So in some members there is, and even there are the few Archaebacteria जिनमें cell wall ही नहीं है, और अगर cell wall है so there is, it will be non-cellulose and it is made up of polysaccharides and protein. So this feature of having different cell wall is responsible for the survival in the extreme condition. In extreme condition, अगर बहुत high temperature हो, acid medium हो, salt हो, in all that condition this Archaebacteria they can survive. So most of the Archaebacteria are chemioautotropic, मतलब chemical reaction के through, so by performing the oxidation, so they can perform their photosynthesis. So they are the primitive type of the bacteria. Archaebacteria, they are the most primitive type, and even they can perform chemioautotropic. Now they live in some of the most harsh habitat such as extreme salty area, marshy area, hot springs, and all these areas you can easily find Archaebacteria. Now, the type of Archaebacteria. Now we'll see what are the different types of Archaebacteria. First one is methanogens. कुछ bacteria, Archaebacteria को बोलते हैं methanogens. But why? Because methanogens, these bacteria, these are present in the gut of several ruminant. ठीक है, जैसे कि cow, buffalo. Okay, so in these animals, इनके gut में पाए जाते हैं, and it is responsible for production of methane or the biogas from the dungs. As we know, the cow dungs, ठीक है, और various animal के जो dungs है, they are useful in producing biogas. तो कैसे possible है? Because उनके जो gut में already these methanogens are present. ये bacteria होते हैं which are present. Okay, and they are responsible for production of methane biogas. Now these are mostly anaerobics. ठीक है, ये anaerobes होते हैं. That means in the lack of oxygen they can perform. But here it is written they are obligate anaerobes. That means the oxygen is poisonous to these bacteria. Means they cannot survive in the oxygenated condition. यहाँ पे oxygen का supply अच्छा हो. So they does not require at all any oxygen. They produce energy by converting hydrogen and carbon dioxide into methane gas. ठीक है, hydrogen and carbon dioxide gas, they are converted in the methane which is CH4 gas. ठीक है, so ये methanogens जो bacteria है, they are helpful in converting, and where they are present in the ruminant's gut. Now the biogas fermenters, okay, biogas fermenters, these bacteriums in the biogas fermenter, these bacterium produces methane gas. And what are that bacteria who are known as methanogens? So they are Methanobacterium, Methanococcus, ठीक है, Methanococcus and Methanobacterium. These are methanogens जो कि methane gas produce करने की capability है. Now we'll see what are halophiles. Halophiles are the bacteria which loves salt loving. ठीक है, salt loving bacteria, they are known as halophiles. So where are they found? अगर वो salt loving है तो definitely they will be produced in the extreme saline environment. ठीक है, like even salt marshes, salt lake हो गया, ये सब area में पाए जाते हैं. They are aerobic chemoheterotrophs. They are aerobic, that means they require oxygen. Okay, so they contain chemical, जितने halophiles है, they contain the chemicals that are known as halorhodopsin. ठीक है, that is known as halorhodopsin, and this chemical is used to pump in chlorine, ठीक है, chlorides into the cell to prevent the cellular dehydration. Cellular dehydration से बचाता है. Okay, and they help to pump chlorides in the cell. Now, Halobacterium and Halococcus, these are the few halophiles which can survive in the salt condition. ठीक है, halophiles are adapted to live under high salt condition due to 4 reasons.
ठीक है. What are the reasons which make them comfortable in residing in the saltiest condition? So that are the presence of special lipids in the cell membrane. तो जितने भी हैलोफाइल्स बैक्टीरियाज होते हैं उनके सेल मेम्ब्रेन में लिपिड का कंटेंट प्रेजेंट होता है व्हिच हेल्प देम टू सर्वाइव. अनदर थिंग इज द अकरेंस ऑफ द म्यूसिलेज कवरिंग. ओके, हैलोफाइल्स के ऊपर एक म्यूसिलेज का कवरिंग होता है जो उन्हें सॉल्टी कंडीशन में प्रोटेक्ट करता है एंड इट डज नॉट allow any plasmolysis. Okay, so absence of the sap vacuoles, there is no sap vacuoles, and even the high internal salt content. The internal salt content of the bacteria is too high, which prevent them to and which prevent them from destruction and damage, and even help them to survive in the salt condition. So after this, halophiles के बाद और भी there are the bacteria which comes under Archaebacteria, thermoacidophiles. These are another categories of the bacteria which can tolerate the high temperature and even they can survive in acid medium. So thermoacidophiles, these are found in the places where the temperature is very high and near about 80 degree centigrade wale temperature maybe they can survive and even in the acidic medium. Okay. So thermoplasma and thermoprotease, these are the bacteria which can survive in this harsh condition. So basically what happened, they are chemiosynthetic. Okay, chemiosynthetic, and under anaerobic condition, these organism oxidizes sulfur to sulfuric acid. Okay, now sulfur से क्या बनाते हैं? Sulfuric acid. Sulfur, if they find water and oxygen molecules agar present ho, to sulfuric acid plus energy also can be produced. So thermoacidophiles, they can survive in the harsh temperature and even low pH में भी survive कर सकते हैं. Acid medium में easily they can survive. So the bacteria are thermoplasma and thermoprotease. Now there are the few another categories of the bacteria, that is cyanobacteria, which belongs to Eubacteria. Eubacteria. So what is cyanobacteria? The cyanobacteria, they are also known as the blue-green algae. Okay. So they are blue-green algae and gram-positive bacteria. They are photosynthetic prokaryotes. They can perform photosynthesis. Photosynthesis easily can be performed by them because they are blue and green in color, which perform oxygenic photosynthesis. Now photosynthetic pigment are present. Okay, is bacteria में cyanobacteria. I hope you are very much familiar with this type of images. Okay, water bodies में this green color, the algae, okay, blue-green algae are easily visible. So they contain the photosynthetic pigment and they are chlorophyll A present होता है, even carotenoids and phycobilins. So these are very commonly found pigments होते हैं जो कि आपको मिलेंगे cyanobacterias में. So food is stored in the form of what? Cyanophacian starch. Starch के form में, but what is that? Cyanophacian starch, lipid globules and protein granules के form में food are stored. Okay, in this cyanobacteria. So cyanobacteria can be unicellular, colonial or filamentous. Unicellular form में आप देख सकते colonies के form में रहते हैं and even filament के form में भी. Filamentous also, colonial also. So filament contain one or more trichomes inside the mucilage sheath. We'll see what is the mucilage sheath. जो कि cyanobacteria है उसके ऊपर एक layer होता है, that is mucilage covering, or simply mucilage sheath is there. Okay, and there is agar the bacteria, they are the filamentous, the blue-green algae, if they are present in filamentous form, so they have trichomes inside the mucilage. Okay, now these cyanobacteria have few important characteristics also. Firstly, we'll see what is the cell structure of cyanobacteria. So cyanobacteria के जो cell है, how it is different from the another. ठीक है, so cyanobacteria, these are so the cell of the cyanobacteria are larger and more elaborate than a simple bacteria. Now the cell structure is typically prokaryote होंगे, definitely they are prokaryote, one envelope organization with peptidoglycan wall. ठीक है, peptidoglycan wall, naked DNA है,
Okay, as you can see the structure of the Cyanobacteria, ठीक है, साइनोबैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर को अगर आप देख सकते हो, सो देयर इज अ स्लाइम कोट, सो देयर इज अ स्लाइम कोट ओवर द होल सेल, पूरे सेल के ऊपर एक स्लाइम का कोट है. देन आफ्टर दैट इज कैप्सूल, ठीक है, एंड देन यू कैन सी देयर आर द वेरियस अनदर स्ट्रक्चर, म्यूकॉइड शीथ, देन आउटर मेम्ब्रेन. So these are the layers, different layers over the cyanobacteria के जो ऊपर में layers है. पहला था slime coat, then the capsule, mucoid sheath, then outer membrane, उसके बाद आता है peptidoglycan layer, and then after that is the inner membrane. Okay, so these are the several layers. Okay, so phycoblastomes also you can see, lipid droplets है, nucleoid है, genetic material which is not covered by the nuclear membrane, vacuoles are also present. Okay, since they are cyanobacteria, they are the blue green algae, they can perform photosynthesis, so यहाँ पे thylakoids भी होते हैं. Okay, thylakoids are also present, endoplasmic reticulum भी present, so is absent. ठीक है, यहाँ पे present नहीं है endoplasmic. As you can see, peptidoglycan होता है wall में, naked DNA है, 70S ribosomes, and absence of the membrane bounded structure. These membrane bounded structures, they are absent. कोई Golgi body नहीं है, कोई mitochondria नहीं है, endoplasmic reticulum also not there. Okay, lysosome, sap, vacuole, these are not present. So cell wall, जो आप cell wall हम लोग देखे थे, ठीक है, they contain outer sheath from outside, ठीक है, and which is jelly like and slimy and mucilage covering. तो ऊपर से जो है ना स्लाइम का लेयर है, दैट इज म्यूसिलिजिनस लेयर. ओके, व्हिच इज जस्ट फॉर्मिंग द सेल वॉल, स्लाइम कोट, कैप्सूल, म्यूकॉइड शीथ, आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद है. सो ऑल दिस टुगेदर एक तरह का वॉल बनाता है ओवर दिस साइनोबैक्टीरिया. नाउ द सेल कंटेंट ऑफ दिस होल साइनोबैक्टीरिया के जो सेल्स है, ठीक है, दे आर बीन डिवाइडेड इनटू टू रीजन. आउटर मोस्ट वाला जो रीजन देख रहे हो, आउटर मोस्ट, दे आर नोन एज क्रोमोप्लाज्म. ये पार्ट जो आप देख रहे हो, आउटर मोस्ट रीजन ऑफ दिस साइनोबैक्टीरिया, दैट आर क्रोमोप्लाज्म. ठीक है, क्रोमोप्लाज्म है आउटर मोस्ट वन. नाउ इनर वाला जो सेंट्रल रीजन देख रहे हो, ठीक है, दे आर नोन एज सेंट्रोप्लाज्म. दीज आर सेंट्रोप्लाज्म. और ये आउटर वाला जो रीजन था, ये था क्रोमोप्लाज्म. सो वी कैन से द सेल कंटेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू रीजन. आउटर इज क्रोमो, ठीक है, which is having the photosynthetic pigment. तो photosynthetic pigment जो है वो आउटर वाले रीजन पे प्रेजेंट है, क्रोमोप्लास्ट पे, ठीक है, क्रोमोप्लाज्म के ऊपर. एंड few other pigments you will see, the photosynthetic pigment in the free thylakoids and the inner colorless centroplasm. और inner में जो है, that is centroplasm is colorless. Now the cell wall is made up of the four layer, ठीक है, four layer with second layer made up of peptidoglycan, okay, and mucopeptide. So just we have seen there is a coat, ठीक है, slime coat है. पहले इसके cell wall में क्या था, slime coat था, then capsule है, mucoid sheath is also there, outer membrane है. After that there is peptidoglycan layer. उसके बाद inner layer है. So several layers are found. 4 layer का बना है इनका cell wall. Okay, cell wall is made up of 4 layer and the second layer is the peptidoglycan and mucopeptides से बना है. Thylakoid membrane, okay, contain chlorophyll A, carotene and xanthophylls. These are also present in the as chromoplasm, जो कि आप colored pigment देख रहे हो, ठीक है, thylakoid membrane में present होता है. Now attached to the thylakoid membrane there are the minute structure which are known as phycoblastomes. ठीक है, again let's see what are phycoblastomes. ठीक है, just attach, they are just after this thylakoid membrane जो आप देख रहे हो, ठीक है, this thylakoid membrane, ओके, तो इस thylakoid membrane से अटैच होता है phycoblastomes. ओके, now phycoblastomes are attached to the thylakoid membrane. Now the reserve food is in the form of cyanophacians, that is myxophacian starch के फॉर्म में food reserve होता है. Okay, so these was about the
Cyanobacteria. Now, in the we can see heterocyst, which is one of the special structure which is present in this filamentous cyanobacteria. इसी cyanobacteria में heterocyst भी present होता है, ठीक है, which that performs special function. And now you will see there is a division of labor in cyanobacteria. Cyanobacteria में आप देख रहे हो वेजिटेटिव सेल है जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे. ओके, एंड दीज आर हेटेरोसिस्ट. ये क्या है? हेटेरोसिस्ट है which help in fixation of nitrogen. First of all, let's see, this is a cyanobacteria, ठीक है, जिसमें आप देख रहे हो ऊपर का ये जो कवर है, ठीक है, that outermost layer is surrounded by mucilage sheath. तो यहाँ पे एक म्यूसिलेज का शीथ है, कवर है, म्यूसिलेज कवर. ओके, एंड देयर इज वेजिटेटिव सेल. हेटेरोसिस्ट है, द सेंट्रल वन हेटेरोसिस्ट. यहाँ पे भी देख रहे हो हेटेरोसिस्ट. सो बिसाइड दिस हेटेरोसिस्ट देयर आर वेजिटेटिव सेल. सो दिस थिक वॉल ऑफ दिस हेटेरोसिस्ट दे आर impermeable to oxygen but permeable to nitrogen. यहाँ पे नाइट्रोजन को अलाउ है, they can just enter, but oxygen they are not allowed to enter. So we'll see the oxygen molecule जितने भी है, heterocyst वाला part है ये, ठीक है, this heterocyst part is shown over here. Now this heterocyst does not allow the oxygen molecules to enter, but nitrogen molecules they can enter. Now mucilage sheath is absent and photosystem 2 is absent, and thylakoids, these thylakoid lack phycoblazomes. ठीक है, फाइकोब्लिजोम्स जितने हैं थाइलाकॉइड से अटैच होते हैं. सो यहाँ पे हेटेरोसिस्ट वाले पार्ट में आप देखोगे it is not present. Okay, so therefore photosynthesis is absent. Heterocysts cannot perform photosynthesis and they are dependent on the vegetative cell, on the another, दूसरे जो vegetative cell है उस पर डिपेंड करते हैं for their nutrition and nourishment also. So simply what? Heterocysts, they are impermeable to oxygen and they are permeable to nitrogen. तो यहाँ पे नाइट्रोजन कन्वर्शन का काम चल रहा है, ठीक है. Photosynthesis is absent in this heterocyst वाले पार्ट में and it is dependent on the vegetative cell for the photosynthesis. And these heterocysts, they are the site of nitrogen fixation. यहाँ पे क्या होता है? Nitrogen fixation. Nitrogen fixation take place in the heterocyst of cyanobacteria. Now, apart from this heterocyst, there are, we'll see what and how the reproduction take place in the cyanobacteria. As we have seen, जो cyanobacteria है ज्यादातर colonies या filament के form में रहते हैं, ठीक है, colonies or filament. So in many filamentous form, asexual reproduction occur, but how? By hormogonia formation. Like you can see, जो nostoc है, ठीक है, this is one of the cyanobacteria. It is filamentous in structure. First of all, its body get cut, ठीक है, and then after that, that body जो इसका homogonia develop, and then finally new filament can be produced from that. Now they are identified by the presence of biconcave disc or separation disc between the adjacent cell. यहाँ पे biconcave disc is present. Okay, this biconcave disc. Okay, so from here the adjacent cell, two different cells get separated and then the filament break from the place of homogonia. ठीक है, hormogonia के place से वो cut होता है and each forms the new filamentous वापस cyanobacteria बनाता है. और this is seen most common है oscillatoria में, जो कि again it is one of the blue green algae. Now what is the economic importance of this bacteria? ये cyanobacteria कैसे important हो सकते हैं? They are colony, अगर colonies के form में हो, they are found in the bare and the barren land. Bare land पे भी पाए जाते हैं in the form of colony. They function as a food for several aquatic animal and even few humans. ठीक है, aquatic animals के लिए food का काम करते हैं. Nitrogen fixation का जो है वो main this cyanobacteria is doing, and often it is used for enriching the content of the soil. So again, cyanobacteria is important for the soil and even nitrogen fixation में भी help कर रहे हैं. Okay, so this was about the reproduction and the importance. Now comes myoplasm, which is again coming under Monera. ठीक है, Kingdom Monera में ये myoplasm भी आते हैं. ठीक है, so this was firstly the scientist who discovered this myoplasm.
ठीक है, they were enocods and rocks. ठीक है, फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया मायोप्लाज्म फ्रॉम वेयर, द प्लूरल फ्लूइड ऑफ द कैटल. ठीक है, कैटल के रेस्पिरेटरी फ्लूइड से प्लूरल मेम्ब्रेन में जो भी कंटेंट था फ्रॉम देयर, एंड इवन जो कैटल्स हु वर सफरिंग फ्रॉम द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एंड प्लूरोन्यूमोनिया. ठीक है, प्लूरोन्यूमोनिया से वो कैटल सफर कर रहा था, तो उनके फ्लूइड से, प्लूरल फ्लूइड से डराइव किया गया ये मायोप्लाज्म बैक्टीरिया को, and that was named as PPLO, Pleuropneumonia like organism, PPLO. ठीक है, and the myoplasm are the organism that completely lack cell wall. इसमें कोई cell wall नहीं है. ठीक है, as you can see this diagram, this is the diagram of PPLO. ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, लिपोप्रोटीन का लेयर है आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन में, आप देख रहे हो. Then there is soluble protein is present, ribosomes are present, even soluble RNA is there, and DNA is also present. Okay, this is the myoplasm, which is the smallest cell, and due to the absence of the cell wall, there is no cell wall, the organism can change its shape. क्योंकि cell wall है ही नहीं है, तो they are having the flexibility होती है, and they are just changing their shape, and for that, since they can change their shape, they are known as pleomorphic. ठीक है, they can change their shape, and they are the smallest living cell, and that can survive without oxygen also. So many myoplasm, they are pathogenic in animals and plants. Now they are resistant to many antibiotics like penicillin, and binary fission is the most common method of the reproduction in this PPLO. So pleuropneumonia like organism, PPLO, जो first, it is the most simplest living cell. ठीक है, so they can survive without oxygen also. Where was it discovered first time? In the pleural fluid of the few cattle, and even that कौन से cattle that was suffering from pleuropneumonia, इसलिए इसका नाम पड़ गया PPLO. It is also one of the it comes in the Kingdom Monera. ठीक है, so now we have came to the end of the Kingdom Monera. We have seen what are the different bacteria, cyanobacteria that are included in the Monera. Now next lecture we'll see about Protista. So thank you for watching.